हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्या मैनुअली बीम करने जाएंगे। सेम एज इट इज़ आप यूएसडी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स में आके आप देख सकते हैं यहाँ पे बीम का फॉर्म वर्क पड़ा हुआ है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन बीम फॉर्म आप इसका सेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। बना बनाया एक सेक्शन आ जाएगा। इट आस्क्स अबाउट द ज्योमेट्री। जिस ज्योमेट्री में आपको चाहिए वो ज्योमेट्री का आप पूरी वैल्यू दे सकते हो। व्हाट्स द विड्थ, व्हाट्स द डेप्थ ऑफ द बीम, कितने नंबर ऑफ स्पैन्स हैं, कितने नंबर ऑफ सपोर्ट्स हैं, विच काइंड ऑफ सपोर्ट्स हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं ना। ड्राइंग विच वन इज़ जस्ट कमिंग, आप उसमें वो सब डिटेल्स बता देंगे। और वो सब डिटेल बताने के बाद आप उसमें वैल्यू फीड करेंगे। लाइक ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में आके आपने बीम नंबर दे दिया किस लेवल पे उसके अकॉर्डिंग, एंड देन उसकी विड्थ, एंड देन उसकी हाइट, नंबर ऑफ स्पैन्स कितने हैं, और उसके बाद सपोर्ट्स पे कितनी उसकी मीन्स किस तरह की सपोर्ट्स हैं। वो चीज़ें आप देखने के बाद जस्ट ओके जैसे प्लेस करते हैं। सेक्शंस एज इट इज़ थिंग है कि आपको कौन कौन से सेक्शंस का व्यू चाहिए। सो लेट मी टेक अ सिंगल वन एंड देन ओके। अब उस नेम का एक एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, सो यू जस्ट नीड टू चेंज द नेम लाइक बीम 1 बिकॉज हियर यू कैन सी के लास्ट वाला जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा होगा उसका बीम 1 पड़ा हुआ है, तो सेम नेम पे वो नहीं करता। ओके, तो जब आप इस पर क्लिक करते हो तो रीइंफोर्समेंट ऑफ बीम का एक सेक्शन तैयार हो जाता है। पानी नहीं होगा बेटे, पानी नहीं होगा बेटे। आप देख सकते हैं इस तरह से आपके पास बीम आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको यहीं कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। प्लेस करने के बाद आप जूम आउट करके देखेंगे तो ये हमारे पास एक सेक्शन विद द बीम ड्रॉ कर पड़ा है। ओके, तो अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जूम इन करेंगे और फिर हम ईएसडी रेनफोर्समेंट में आ जाएंगे ना। ईएसडी रेनफोर्समेंट आप देख सकते हो, इसमें रेनफोर्समेंट के लिए ऑप्शन दे रखी है। तो आप रेनफोर्समेंट पे क्लिक करते ही एक न्यू टैब खुल के आएगा। ठीक है, जिसमें आपको बताना है कि किस तरह की बार आपने इसमें डालनी है, क्या उसका ढाया होगा, क्या नॉर्मल स्ट्रेंथ होगी इस बार की, वो सब चीज़ें आप इसमें बताते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं डायमीटर ऑफ बार इज I'm going to take a 12 dial, cover is 25 mm, and then 415 is the normal strength of the bar. 135 I'm going to take it 90 same here, and then the type of bar. Okay, so this one, and then points from this मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ यहाँ से। सेकेंड एंड टू एंड डालने से इस ऑप्शन को लेंगे, इट्स जस्ट लाइक अ पॉलीलाइन और होगा। और फिर आप पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करते हो एंड देन इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट एंड देन नेक्स्ट वन, उसके बाद लास्ट वन। इस तरह का पॉइंट ले देंगे और प्लेस करके वो वहाँ पे रेनफोर्समेंट को प्लेस कर देगा। देन इट आस्क्स अबाउट द पोजीशन नंबर 1, स्टाइल नंबर 1, एंड देन ओके। ओके करने के बाद वो डिस्क्रिप्शन देगा उसके, आप उसको कहीं भी प्लेस करके देन एंट्री प्लेस कर दीजिए तो डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। सिमिलरली आपको नीचे के लिए करना है, अगेन क्लिक ऑन दिस वन एंड द एंगल इज -90 again, and then 2 points, this one, and then 2 points from this point. I center for side to change the side. Okay, you can click the center to change the side. So this is basic format कि आप कैसे यहाँ पे सेम है तो आपने 2 नंबर प्लेस कर देना, स्विच की हेल्प से नंबर 2 स्टार। तो बेसिकली आपने इस तरह से प्लेस कर दिया। नेक्स्ट फिर रेनफोर्समेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास होता है रेनफोर्समेंट क्रॉस सेक्शन ऑप्शन। रेनफोर्समेंट
क्रॉस सेक्शन में आप जाकर क्लिक करके आप टाइप ऑफ स्टीरअप देख सकते हो, कौन सी बार प्रोवाइड करनी है आपने, रिंग बार। एंड देन आप उसका डाया यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ 8 मिनट टाइम नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट चेंज करेंगे FE415, यहाँ से कवर ले लेंगे 25 में, देन एंगल इज 135, डायगोनल, क्लिक ऑन डायगोनल, फर्स्ट पॉइंट एंड देन लास्ट वन आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेस हो गया। इसके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं इंटीजर कंटेंट 3 अंदर आके क्लिक हो गया नॉर्मली। अब इसकी रेनफोर्समेंट को हम स्टीरअप्स को इनवे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास होता है रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन। आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस select the reinforcement type stirrup जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, and then enter then the linear means in a linearly we are going to place it linearly stirrups, okay। So we are going for a zone and module, basically we use zone, module and capital, but basically zone is the main one, so click on this one and then okay, and select the sections from right to left, from this place to this place, okay। And after this I am going to define a zone from where my stirrups getting started, from this place, this is the first zone, and get end over here, and then the next zone, and this zone ends over here, and the last zone I get end over here, okay। तीनों जोन हो गए, then place it over here, आप देखेंगे यहाँ reinforcement पड़ी होगी। Then here you can see the number of zones, here we have 3 number of zones, currently we are in number first zone, okay। We can change the spacing over here, how much I'm going to place it at 75, you can change the number of bar, because मैंने spacing change किया तो number of bar में changes आप देख सकते हो। So this one is now 10, okay। As it is now in section number 2, here I'm going to place it at 120 or 150 mm, so number of bar यहाँ भी change होंगे, going to be 10। Then the last section again I'm going to take it to 75, and I'm going to be this is a 9, and then okay। After this again ये आपको प्लेसिंग के लिए पूछेगा, सेक्शन के जो डिटेल्स आपकी आएंगी, the system is little bit slow, you can change the format in which it's going to show the description of the bar, so आप इस ऑप्शन को ले लीजिए, then okay, आप यहाँ देख सकते हैं, it's going to show you about this, so I'm going to take it to this side, okay। So it shows the 32 bars 8 डाया की 75 mm डिस्टेंस पर and 150 डिस्टेंस पर प्लेस की गई है। So basically this is the way how we are going manually to create a BBS, okay। So अभी इसकी टेबल बाकी है, for this table go to a main table, and then main table select, go on selection, okay, go on selection, and then select them all like this, now you can have a main table over here। अब इस टेबल को आप यहाँ प्लेस कर दीजिए, आपकी मेन टेबल about the main bar, type the main bar, number of bars and the length in meters and the bar details, okay। And again for the furthest means bars summary table, you can place it over here, तो आप यहाँ पे bar summary table देख सकते हैं, selection and table, and click on this, okay। So this is bar summary table, okay। So this is all about the normal beam. Now we are going to make a cantilever beam of a different kind of style, okay। So I'm going to make a cantilever beam, for this we हमारे पास है SD
स्ट्रक्चर एलिमेंट में हमारे पास कैंटिलीवर ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको कैंटिलीवर ऑप्शन है बस इसे ना सिंपल वे, तो सिंपल वे आप खुद कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा टिपिकल दिखाता हूँ कि कैसे आप एंगल में एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, सो we take a line option, draw a line with the ortho on, so the length of column is 2000, 2000 draw line at this point. This is going to be a 1000 mm, 1000 mm, and here is 200 mm, and then diameter line 300. Okay, so इस तरह से डिलीट कर सकते हैं, ड्रीम ऑप्शन, एंड देन इसको ऑफसेट आप दे सकते हैं आपको 300, and this side, and then diameter line so basically this is the section. इसके बाद हमारे सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, डायमेंशन ऑफ 300 mm into अगेन एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, डायमेंशन 230 mm, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें रेनफोर्समेंट प्लेस करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ कॉलम्स के लिए देख लेते हैं, यहाँ से एज इट इज़ मैंने इस पर क्लिक किया, टाइप ऑफ जो हम कॉलम में प्रोवाइड करेंगे लाइक 16 mm ऑफ अ क्लियर कवर ऑफ 40 or 35 in which you interested, and 500 bar type. Now I'm going to take a now. Check 2 points. First one, center for side, change the side. Okay, आप इसकी डिटेल कर सकते हो। अगेन इसमें आप क्लिक करेंगे तो 2 points, so इन 2 points
Okay, so basically this one is a and to see its top view here, going to see the interdimension 300 and 300 mm. So this is a column. Okay, so हम यहाँ column को place कर देंगे. You can see it over here. And after this हमें यहाँ पे reinforcement place करनी है. Which one is straight? उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से reinforcement type ले लेते हैं. And this reinforcement type I'm going to take a die of a 12 and then the 25 mm. 25 mm and here the hooks are 90. Again is 90. Okay, so select the points, take a polygon option, select the points. So first point is here, that is 74 side. Here I'm taking a wrong angle, so I'm going to change the angle. It's 90, not a minus 90. Okay, and points, and you can see यहाँ से यहाँ तक मैंने एक सेक्शन ड्रॉ करना है. ओके ओके अगेन हमें दूसरी साइड जाना है. एंड फॉर द अनदर साइड मैं अगेन ये बार लूँगा और इस बार में मैं फिर अब यहाँ पे -90 एंड -90 प्लेस करूँगा. एंड अगेन है going with the points option with the first point and the second one and control Z. So let me start it again. Okay, from the points started from here. Okay, first point, second point, third point. Okay, so this is the picture view. कैसे प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद वी नीड टू गिव इट अ स्टिरअप. तो स्टिरअप्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टिरअप ऑप्शन लेंगे. इस ऑप्शन पर क्लिक करके टाइप ऑफ स्टिरअप सेलेक्ट करेंगे, डाया ऑफ 8 एंड देन सेलेक्ट द ग्रेड एंड देन 25 mm. So 135 okay, diagonal at this point to this point first. Okay, press dial, enter. Again next one, dial of 8 and the diagonal and this point to this point, enter. Okay, and similarly over here. आफ्टर दिस हमें प्रोवाइड करनी है रिइंफोर्समेंट. तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम इस कॉलम में प्रोवाइड कर देते हैं रिइंफोर्समेंट. इन कॉलम के लिए हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन पे आएंगे. डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट द स्टिरअप reinforcement we want to distribute and click on here, select the zoner option, start from here. Okay, so I'm going to start at this point. Stirrup this one and so on, and then at this point to this point and then zone. If you want to draw it in single zone, then first click is over here and then last click is over here. It's a single zone. The spacing is 120. You can see the change in bar. Okay, and then okay. यहाँ पे देख सकते हैं कितना नंबर ऑफ बार आ गई. 14 bars of data है 120 mm spacing. Okay,
नेक्स्ट वन हमें यहाँ पे स्पेसिंग प्रोवाइड करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अगेन वी आर इन डिस्ट्रीब्यूशन, select this one, reinforcement direct distribution में मांगे हो जाएगा linearly varying, because you can see over here में linearly vary कर रहा है, तो linearly varying पे क्लिक करेंगे, then zonally रहने देंगे, and after this हम क्या करेंगे, okay, and it about the cut by line segment, इसका segment कट करेंगे, okay, oh I just need to take it wrong way, तो यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे, select करेंगे बार को, then आपको linearly varying, and then cut the section bar, right, देख सकते हैं, I'm going to cut the section this one, okay, any kind of problem, let me check this, select the bar first, enter, and then okay, so I'm going to cut this section, okay, after cutting this section, I'm going to select the peak points, which one from this point to this point, and this point, and the last one point is here. Then I need to select the direction, किस direction में आपको reinforcement provide करना है, so I'm going to this one direction, okay, enter, then it asks about the zone, okay, then enter zone, number of zone required 1, enter, so number of zones is required कर दिए, angle is 90, you can change the spacing in between them, I'm going for 70, not 8, okay, so number of bar get changed, you can see it over here, and then okay, so simply this is a way to provide a reinforcement in this time, okay, so you can change it over here, यहाँ पे आप इसके description को place कर सकते हो, okay, similarly आपको यहाँ करना है, यहाँ आपको यहाँ linearly varying आपको इसी तरह से करना पड़ेगा, and then click on this, enter, and select the zoom option at this point, okay, starting from here to इसको देख सकते हैं, click on this, enter, to start a linear from this point, okay, starting from here and starting here, and then number of zones, this is first one, this one is the last one, enter, and you can change the spacing over here, I'm going to play it at 80, and then so this one is all about the spacing. Next one is how we are going to, this one is how we are going to show the point bar, because here we can see the point bar, or we are going to create a point bar, because these bars in the front section देख सकते हैं, ये bars हमको front से नजर आएंगी, so it's difficult for us to see show it over here, so I'm going to show in the section one, because these bars are always visible to us in a section view, okay, so for a section view I have a point reinforcement point, click on this, whose point reinforcement you want to show, click on that one, and the sections where you want to show it, so I'm going to select the all bands over here, and this your option, select the all bands and select the bar, whose bands you want to show this out, click on this and then enter, okay, place it, okay, so this is how we are going to show the point bar, so basically, and after this हमें क्या करना है, इसके बारे में इसकी टेबल निकालनी है, तो this table main table, click on selection and then select the whole
selected, and we are in the main table. Okay, and again for the bar, section bar, bottom of the table, click on this and the selection of table, the table, enter. This one is the maximum table. So this is all about the cantilever beam. So you need to provide a points whatever you want. So this is all about automatic and manually creation of beam. Thanks students.